Hello everyone, warm welcome to Super Coaching Regulatory Bodies YouTube channel by Testbook. My name is Madhav Sir, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अगले इंपॉर्टेंट सेशन में जो कि है फाइनेंस करंट अफेयर बेस्ड। आज हम डिस्कस करेंगे 9th to 11th ऑफ मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जिसमें हम कवर करेंगे आरबीआई नोटिफिकेशंस को, आरबीआई सर्कुलर्स को, आरबीआई प्रेस रिलीज, इवन आरबीआई बुलेटिन, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे सेबी नोटिफिकेशंस एंड सेबी सर्कुलर्स को एज वेल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था कि सर वी विल बी कमिंग अप विद अ डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग रिलेटेड टू द फाइनेंस करंट अफेयर्स। तो आज मैं एज पर माय प्रॉमिस मैंने इंक्लूड किया है एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और उस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को जब आप आंसर करेंगे तो उस आंसर का स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड देन आई विल बी गिविंग यू दिस एज अ होमवर्क, यू राइट अ फाइनल आंसर, और फिर आई विल बी गिविंग यू द सैंपल आंसर एज वेल, ताकि आप अपने फाइनल आंसर को मेरे दिए गए सैंपल आंसर से मैच कर पाए। ठीक है जी, रेडी? आई होप एवरीथिंग इज फाइन, लाउड एंड क्लियर। इफ सब कुछ सही है और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से इस डिस्कशन को स्टार्ट करूं, तो आई वॉन्ट एवरीवन टू जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, बहुत बढ़िया, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन नाउ। सबसे पहली चीज, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं सेशन के पीडीएफ को, तो ये जो सेशन का पीडीएफ है दैट विल बी अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। यू कैन जस्ट ज्वाइन द लिंक, क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और आपको यहां पर आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब जल्दी से हम ये देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जहां से हम स्टार्ट करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एफडीआई। तो एक एफडीआई की न्यूज है दैट इज नॉट रिलेटेड टू इंडिया, रादर इट इज रिलेटेड टू दुबई, लेकिन उसको हम इंडिया से कैसे रिलेट करेंगे, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, फिर इंडिया की स्टेट वाइज एफडीआई का क्या स्ट्रक्चर है, इंडिया के सेक्टर वाइज एफडीआई का क्या स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ग्लोबल लेवल पर एफडीआई का क्या स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू कैन सी दिस इज हाउ वी कवर द एंटायर न्यूज इन वन डिस्कशन इटसेल्फ। तो अगली बार अगर आपके पास न्यूज में या एग्जामिनेशन में एफडीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आई एम प्रीटी श्योर वो क्वेश्चन आप यहां से आंसर कर पाएंगे। उसके बाद हम एक डिस्क्रिप्टिव आंसर डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द सेम, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने ब्रांड फाइनेंस ने जो लिस्ट दी थी, ब्रांड फाइनेंस ने जो टॉप 100 इंश्योरेंस लिस्ट दी थी, स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन, उस लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक कॉन्टिन्यूएशन है न्यूज की, वो न्यूज डिस्कस करेंगे। देन वी विल बी मूविंग अहेड एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेबी हैज कम अप विद न्यू अपडेट्स रिलेटेड टू द आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके लिए सेबी ने कुछ नए नॉर्म्स को जनरेट किया, कुछ नए नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। तो आइए जरा बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो न्यूज क्या है वहां से समझते हैं। सो न्यूज इज वेरी सिंपल। न्यूज ये कहती है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर of Dubai, और I would say India is one of the largest investor in Dubai। तो क्वेश्चन ये है, न्यूज ये है कि इंडिया emerges as the top source of FDI into Dubai। तो ये हमारे पास न्यूज है। पहले इस न्यूज को डिस्कस करते हैं, फिर एफडीआई का पूरा जो स्टोरी है रिलेटेड टू इंडिया वो डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसे डिस्कस करेंगे। प्लीज पे अटेंशन। सो आई विल स्टार्ट बाय डिस्कशन विद द फर्स्ट पॉइंट। इंडिया हैज emerged the top source country for the foreign direct investment into Dubai। ये UAE के लिए नहीं है, I'm talking about only and only one city of UAE, that is Dubai। तो दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म डेटा ने ये डेटा प्रेजेंट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया हैज emerged the top source country for foreign direct investment into Dubai, और इंडिया का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है दुबई में, it has increased 5 times in comparison to the previous year। यानी 2023 में जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया द्वारा किया गया, इस बार 2024 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया द्वारा 5 टाइम्स की गई है, विच इज वेरी मच क्लियर दैट इंडिया इज ईगरली इन्वेस्टिंग इन दुबई। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, दैट इन्वेस्टमेंट इज डन इन द रियल एस्टेट एज वेल एज द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है बाय द इंडियंस। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सर ये इन्वेस्टमेंट 5 गुना इंक्रीज हुई है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करें टॉप 5 इन्वेस्टर्स की, तो दुबई के जो टॉप 5 इन्वेस्टर्स हैं
Obviously on the first we have India, then we have US, France, UK as well as Switzerland. यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि सर इस बार दुबई ने अट्रैक्ट किया है 14.24 बिलियन डॉलर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इज 33% हाई विद कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। एक तरफ हम कह रहे हैं कि सर जो एफडीआई है that is slowing down in the economy. On one side we are saying that FDI is slowing down in the economy, but on the other side if you see, Dubai has recorded 33.3% increase, 33.3% increase in the foreign direct investment. तो दुबई में जो foreign direct investment है that has been recorded around 14 billion dollars. अगला पॉइंट जो यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या सर, अभी तक का सिंस 2020 अगर हम बात करें तो ये दुबई में रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट एनुअल एफडीआई है, जिसमें मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट है दैट हैज बीन डन इन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। नाउ द क्वेश्चन इज क्या सर ये डेटा हमें याद रखना? नहीं, आई हैव जस्ट इंक्लूडेड दिस डेटा बिकॉज आई हैव टारगेट और आई वाज थिंकिंग अबाउट डिस्कसिंग द टर्म दैट इज ग्रीनफील्ड एफडीआई। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ग्रीनफील्ड एफडीआई, तो आप आंसर क्या देंगे? Sir, FDI is classified into two categories on the basis of investment. एक को हम नाम देते हैं, we call it as greenfield FDI, और दूसरी को हम नाम देते हैं brownfield FDI. दोनों में क्या डिफरेंस है? सर, जब भी कभी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर इन्वेस्ट करे और इन्वेस्ट करके जीरो से इन्वेस्टमेंट या जीरो से कंपनी सेटअप करे, जीरो से मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस यूनिट सेटअप करे, दैट इज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल BMW is investing in India और BMW ने इंडिया में आकर इन्वेस्ट किया, पहले लैंड खरीदा, उस लैंड पे अपना असेंबली यूनिट सेटअप किया, असेंबली यूनिट सेटअप होने के बाद फिर इंडिया में आकर उन्होंने क्या किए, कुछ कमर्शियल लैंड्स खरीदे, कमर्शियल एरियाज खरीदे, जहां पे BMW ने अपने क्या सेटअप किए, सेलिंग यूनिट्स यानी कि अपने शोरूम सेटअप किए। जैसे अगर मैं अभी बात करूं टेस्ला की, तो टेस्ला अभी रिसेंटली न्यूज में था जहां पे ये पता लगा कि टेस्ला इज लीजिंग आउट लैंड, टेस्ला इज लीजिंग आउट द बिल्डिंग्स, जहां पे टेस्ला अपना क्या बनाएगा सर, टेस्ला इज गोइंग टू सेट अप इट्स सेलिंग यूनिट। तो यहां इसे कहते हैं ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल से इन्वेस्टमेंट हो रही है, जहां पर पहले इन्वेस्ट होगा, लैंड खरीदा जाएगा, कंस्ट्रक्शन होगी और फिर कहीं जाकर जो ऑपरेशंस है दैट विल बी इनिशिएटेड। दूसरा पॉइंट आता है ब्राउनफील्ड एफडीआई, आंसर है सुजुकी। सर सुजुकी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, इंडिया की चलती कंपनी में इन्वेस्ट किया, दैट इज मारुति, और इन दोनों ने फिर मिलकर एक कंपनी बना ली, दैट इज मारुति सुजुकी। सो व्हेन अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट इन इंडिया एंड दे इन्वेस्ट in already existing company, we call it as brownfield FDI, and if they invest from zero ground, or I would say they invest and they set up the company from zero level, we call it as greenfield FDI. अब एक पॉइंट आपके दिमाग में होगा कि सर जब कोई कंपनी इंडिया की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, we call it as ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। देखो अगर इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के थ्रू हो रही है, दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ग्रीनफील्ड, बट इट कैन बी टर्म्ड एज ब्राउनफील्ड और इट कैन बी टर्म्ड एज एफपीआई। तो यहां पे डिफरेंस क्या होगा सर, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और एफडीआई में क्या डिफरेंस है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग मोर देन 10%, अगर आप 10% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में, दैट विल बी टर्म्ड एज एफडीआई। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10% से कम है इन अ कंपनी, देन इट विल बी टर्म्ड एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव मी यस सर। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द फैक्ट सेज एज पर द फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड एफडीआई मार्केट डेटा, अकॉर्डिंग टू द Financial Times Limited FDI market data, Dubai has been ranked world's #1 destination for greenfield projects. So अगर आपसे कोई पूछेगा name the destination, name the top destination or world's #1 destination for the greenfield FDI project, then your answer would be, sir, the answer is Dubai, and it is not the first time. For the fourth consecutive year, Dubai has been termed as or designated as world's #1 destination for the greenfield project. You need to remember this. Is it clear everyone? I hope the point is clear till this part. ये तो थी हमारी न्यूज जो कि हमारे सामने आई। अब इस न्यूज से मेरे दिमाग में जो जो चीजें आई, आई वुड लव टू डिस्कस विद यू। जैसे मैंने ये न्यूज देखी, मुझे समझ आया कि एफडीआई रिलेटेड न्यूज है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि इंडिया भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है फॉर द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड।
तो दुबई भी ऑन सेम ग्राउंड था, दैट इज द रीजन आई हैव इंक्लूडेड दिस न्यूज। अब इतनी न्यूज के बाद अब मेरे दिमाग में आया कि सर इंडिया में एफडीआई का क्या स्टेटस है, वो जरूर मुझे डिस्कस करना चाहिए। इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई कौन सी कंट्री से की गई, आई शुड शेयर दैट विद यू। इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई पिछले फाइनेंशियल ईयर में कौन सी स्टेट में इंट्रोड्यूस की गई या कौन स्टेट में रिकॉर्ड की गई, आई शुड डिस्कस दैट। और इंडिया के कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई हुआ, तो वो सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने आज इस सेशन के डिस्कशन में लेकर आया हूं। तो अगला पॉइंट क्या आएगा सर? अगला पॉइंट ये है कि अगर हम बात करें इंडिया और इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम एफडीआई की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, the government of India FDI equity inflow into the country has decreased about 3.5%। तो पिछले साल के मुकाबले इंडिया में जो इस साल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया गया इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इट हैज बीन रिड्यूस्ड। और अगर मैं कहूं तो पिछले कुछ सालों में, पिछले 5 सालों में आज तक का सबसे लोएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लोज देखा गया, दैट इज $44.42 बिलियन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा एफडीआई का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब ये इन्वेस्टमेंट की जाए इन ऑर्डर टू टेक ओवर द इक्विटी, दैट मींस इन ऑर्डर टू टेक ओवर द इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, इन ऑर्डर टू टेक ओवर द एक्चुअल ओनरशिप ऑफ द कंपनी, वी कॉल इट एज इक्विटी इनफ्लो। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि सर इंडिया में 2023-24 में, इंडिया में 2023-24 में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री से हुआ? सो दैट इज सिंगापुर, सेकंड इज मॉरिशियस, थर्ड इज यूएस, फोर्थ इज नीदरलैंड्स, फिफ्थ इज जापान एंड सिक्स्थ इज यूएई। तो जहां इंडिया दुबई का लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है, वहीं यूएई इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन द कंट्री। तो ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। मूविंग अहेड, अगला पॉइंट क्या है? So Singapore has been the largest source of FDI for India since 2018-19। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एवर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ था दैट वाज इन 2022, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021-22। और उस समय जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो कितनी वैल्यू का था? सो दैट वैल्यू वाज $84.83 बिलियन। एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज की अगर हम बात करें तो एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज अनडाउटेडली डिक्रीज हुआ है फ्रॉम द मेजर कंट्रीज। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि जापान, नीदरलैंड्स, जिन कंट्रीज से हमने रिकॉर्ड किया इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द पास्ट। बोलो ये पॉइंट समझ आया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो पहला पॉइंट क्या कि सर अगर हम इंडिया के एफडीआई की बात करें तो इंडिया में 2023-24 में जो इक्विटी इनफ्लो था एफडीआई का दैट वाज $44.42 बिलियन। इंडिया हैज रिसीव्ड हाईएस्ट एफडीआई फ्रॉम सिंगापुर नॉट ओनली इन 2023-24 बट अगर मैं देखूं सिंस 2018-19 तो अगर हम देखें तो लार्जेस्ट जो इन्वेस्टर है इंडिया में, जो लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है दैट इज सिंगापुर, सेकंड इज मॉरिशियस और यूएई का रैंक है 6th। यूएई के बारे में क्यों बार बार बात कर रहा हूं? क्योंकि वी हैव इनिशिएटेड दिस डिस्कशन फ्रॉम दुबई इटसेल्फ। अगला पॉइंट यहां पे क्या आता है सर? अगला पॉइंट यहां पे ये है कि अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया को आज तक जो लार्जेस्ट या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एफडीआई विटनेस किया गया, सर इंडिया हैज विटनेस द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एफडीआई इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और कितनी वैल्यू थी? सर दैट वाज $84.83 बिलियन। ये वो कंट्रीज हैं जहां से इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, और अगर मैं बात करूं ये वो कंट्रीज हैं जहां से इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ इन द पास्ट। सो जस्ट रिमेंबर द नेम्स। नाउ इफ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड आई से कि 2023-24 में इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट एफडीआई इन इंडिया? तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो एफडीआई रिकॉर्ड किया गया इन विच स्टेट? सर इट हैज बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एफडीआई रिकॉर्ड किया गया। ऑन द सेकंड रैंक वी हैव गुजरात, सो वी हैव रिकॉर्डेड सेकंड हाईएस्ट एफडीआई इन गुजरात एंड थर्ड हाईएस्ट एफडीआई इन कर्नाटका। So these are the top 3 states. If I say Gujarat has done really very well in financial year 2023-24 because before this financial year Gujarat was behind Karnataka and Delhi, but now Gujarat has surpassed
Karnataka and Delhi, and it has become the second largest foreign direct investment receiving nation, foreign direct investment receiving state in the country. तो ये चार नाम इंपॉर्टेंट हो गए, Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Delhi. Directly you can use this data while writing a good descriptive answer, and even you can expect a direct question on the same. Last but not the least is, this is the data related to the states. Last part is related to the sectors. अगर हम sectors की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हर बार रिकॉर्ड किया जाता था, दैट इज सर्विस सेक्टर. अगर मैं पिछले 5 साल का एवरेज लूं तो सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज रिकॉर्डेड इन सर्विस सेक्टर. लेकिन इस साल की बात करें 2023-24 तो सबसे ज्यादा या हाईएस्ट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. सेकंड इन सर्विस सेक्टर. थर्ड अगेन सरप्राइजिंगली दैट इज कंस्ट्रक्शन. फोर्थ इज ट्रेडिंग. फिफ्थ इज पावर. और जो आपका थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर था किसी जमाने में, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन. टेलीकम्युनिकेशन इस लिस्ट से ही क्या हो गया, बाहर हो गया. टेलीकम्युनिकेशन इस लिस्ट से ही क्या हो गया, बाहर हो गया. इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? तो अगली बार अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे रिलेटेड टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2023-24, आई एम प्रीटी श्योर आप आंसर कर पाएंगे. दुबई रिलेटेड ये न्यूज थी, उस न्यूज को मैंने इस तरह से एग्जैजरेट किया ताकि अब एफडीआई रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर पाएंगे. अब आप कहेंगे कि सर अभी तक आपने जो बात की है दैट इज ओनली रिलेटेड टू 2023-24, व्हाट अबाउट 2024-25? तो हैव अ डेटा फॉर दैट एज वेल. रिसेंटली एक न्यूज थी, दिसंबर 2024 में ये न्यूज दी गई थी कि इंडिया हैज रिसीव्ड टिल डेट $1 ट्रिलियन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंस 2000. तो 2000 से लेकर आज तक 2024 तक इंडिया में $1 ट्रिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया गया है, विच इज आई वुड से अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन विच हैज बीन अचीव्ड बाय इंडिया. उसके साथ साथ अगर हम देखें इस बार 2024-25 is showing a good signs in terms of foreign direct investment, क्योंकि 26% का इंक्रीज देखा गया इन द फर्स्ट हाफ. तो जो आपका फर्स्ट हाफ था दैट इज फ्रॉम 1st April 2024 to 30th of September 2024, it has been recorded 26% increase in the foreign direct investment, and we have recorded a total foreign direct investment inflow of $42.1 billion. तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में we are witnessing, as per the data, we are witnessing positive or growing FDI rates or FDI data in comparison to the previous financial year. अब इस न्यूज के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, लेकिन उस क्वेश्चन पे जंप करने से पहले अगर आपने इंडिया के बारे में समझ लिया तो क्यों ना ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है वो भी देख ले. तो अगर हम ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल लेवल पर एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई, and if I talk about that particular report is, so that report was presented by UN Trade and Development, and according to that particular report, on global level foreign direct investment has slowed down by 2%. that means वहां पर ग्रोथ की बजाय कॉन्ट्रैक्शन है. डेवलप्ड इकोनॉमीज में इट हैज विटनेस्ड 9% पॉजिटिव. यूरोप इज विटनेसिंग अ नेगेटिव. That means there is a contraction in terms of foreign direct investment in Europe, in North America, even in developing economies, in Africa, in Latin America, Asia. हर एक एरिया में सिवाय डेवलप्ड इकोनॉमीज के कॉन्टेक्स्ट को अगर मैं हटा दूं तो 2023 में ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके पास क्या देखा गया, नेगेटिव या कॉन्ट्रैक्शन देखा गया in terms of FDI. तो remember that global FDI has fell down 2% to 1.3 trillion in 2023 as per the latest report which has been presented by UNCTAD. Is it clear everyone? Is it clear everyone? Yes, it's absolutely correct Parmeshwar, because the point is whenever we talk about stock market, it is basically based on your valuation. It is basically based on the company's valuation, and the valuation depends on revenue as well as turnover and many other factors which can change very abruptly. Now, I have a question for you on the basis of this particular news. Let's see who all can identify that what could be the correct answer for the same. So if I say
The question which can be asked, discuss the factors that are driving India's FDI growth. So we have witnessed that since 2000, India has recorded $1 trillion of foreign direct investment, and even after COVID, foreign direct investment has witnessed a great jump in the country. Keeping that in mind, examiner can ask you a question. Discuss the factors that are driving India's FDI growth. अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता, what should be your answer? See, if you are writing down the structure, what you should do is, first you should think of introduction, then you should think of the main body, and then you think of the conclusion. I'll not take much time of yours. I'll just jump to the next news. But before that, you must set the stage. And if you are setting the stage where they are saying what are the factors that are driving India's foreign direct investment growth, which means in the question itself, they are saying that India's foreign direct investment is growing. So you should start with the data that the current status of foreign direct investment in India is so and so. It has grown by it has reached to a mark of $1 trillion since 2000, and we have witnessed a positive growth in 2024-25 as well. This should be mentioned in the first paragraph. That is the introduction. In the second paragraph, that is your main body. In the main body, you must discuss the initiatives, the government policies, the government reforms which have been taken up in order to boost the foreign direct investment in the country, and then you conclude with the impact. Then you conclude with the impact of these initiatives. You must be worried and you must be thinking कि sir इससे answer कैसे होगा? Don't worry, I have the answer for you. So I have the structure. Structure says you must set the stage whenever there is a question in this manner, जिसमें question ही positive है. Question itself is lighting on the fact that yes, India's FDI is growing. Then you come up with a statement with a fact that yes, sir, India has reached $1 trillion in foreign direct investment inflow since 2000, and it is further supported by 26% rise in the FDI to $42.1 billion in the first half of the financial year, that is 2024-25. Now, coming to the second, that is the main body. In the main body, you talk about the factors which have influenced, which have boosted the foreign direct investment in the country. So the factors are, first one, bilateral investment treaty with UAE and other countries which have been done by India. Then we have a production linked incentive scheme, Make in India initiative, foreign investment facilitation portal, PM Gati Shakti policy reforms, and FDI liberalizations. These are the initiatives, these are the reform changes which have been done by the government, which has directly as well as indirectly boosted the foreign direct investment in the country. I hope you are getting my point. Guys, I hope you are getting my point. First, set the stage, supporting the question itself. Then in the main body, answer the question. And the question was, what are the factors? So these are the factors which are supporting. So policy reforms, I have included tax reform that has been done related to the corporate tax as well as individual tax, which will undoubtedly boost the foreign direct investment in the country. After discussing the factors, now you need to conclude this answer. So in the conclusion, you must give the results. You must discuss the results of these initiatives. So the result of these initiatives is India is doing really very well under World Competitive Index. India is doing well. Do share the rank of India in the latest indices. So World Competitive Index, Global Innovation Index, do share India's rank that India has become the third global, or I would say India is ranked third for the Greenfield projects as per the World Investment Report, and India has witnessed an improvement in the business environment according to the Ease of Doing Business report presented by World Bank. And these are the reasons, or I would say this is the positive impact of the factors which have been, or the initiatives which have been taken by the government, and due to these initiatives, these results have been recorded, and due to these results, India is witnessing huge FDI growth. India is witnessing huge FDI growth. Is it clear, everyone? Is it clear, everyone? So this is how you need to write an answer for this particular question, and it is one of the most appropriate question which can be asked in your examination. If it is clear, if you like the discussion, just give me yes sir, so that we can move ahead. So this is how I
expect from you all that you should cover a particular news whenever you are studying on your own. The news was just related to Dubai. Most of you must be thinking that this is one of the useless news with respect to RBI Grade B exam. So I made it important because India was on the first rank. That is the reason it is important. Secondly, while covering this particular news, I made it important by including India and FDI. While discussing this, I discussed few facts related to the FDI structure in India. Then we discussed the FDI received by the states or the states with highest FDI received in the past year, and even we have discussed the sector-wise investment which has been done in different sectors. Is it clear, guys? Is it clear? And even in the end, I have concluded that for 2023-24, I have discussed or I have shared the actual data. We are still waiting for the actual data for 2024-25, but still we can come up with the first half yearly data which I have shared with you. Okay. This is your descriptive question and this is the structure you must follow in order to answer this kind of descriptive question. Now, let's jump on to the next news of the day. The next news talks about, so recently, India's life insurance company related, we have come up with a claim settlement report. So what is this claim settlement report? Please pay attention, guys. Let's suppose you visited an life insurance company, an individual A has purchased a life insurance policy from company B, and this life insurance policy says that company B will be paying your family or the nominee at the time of death. And suppose A dies today. The moment A dies, then the family as well as the nominee, they will inform the company that yes, sir, under this insurance policy, राहुल ने या राम ने आपके पास इंश्योरेंस कराया था और इंश्योरेंस के बदले में अब क्लेम देने का टाइम आ चुका है, आप प्लीज क्लेम दीजिए. सो कंपनी बी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू सेटल दिस क्लेम. Company B will be responsible to settle this claim, and this process is known as claim settlement. This process is known as claim settlement. From this particular discussion, we have one more point, and that one more point is, so that is known as claim settlement ratio. Now the question is, so what do you understand by the word claim settlement ratio? When this question is asked, claim settlement ratio, so claim settlement ratio can be calculated in different ways. For example, number of insurance policies sold upon number of claims given. So number of insurance policies sold by the company upon with respect to the number of claims paid. This can be termed as what? So this can be termed as claim settlement ratio. So these are the number of insurance policies against which we have received the death of the nominee or we have received the death of the insured, and against those number of insurance policies how many claims have been given. एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी है, उस इंश्योरेंस कंपनी ने 100 इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस किए और उस 100 इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस में 100 इंडिविजुअल्स की डेथ हुई, लेकिन उसमें से केवल 80 इंश्योरेंसेस को ही सेटल किया गया. 20 आर स्टिल 20 आर स्टिल पेंडिंग. सो व्हाट विल बी द रेशियो? सो रेशियो इज गोइंग टू बी 80%. दैट मींस आउट ऑफ 100 claim request, out of 100 claim demand generated, only 80% have been achieved. Got it, guys? Now, notably, claim settlement ratio for the individual death claims within 30 days. So this is claim settlement ratio within 30 days by the India's private insurance companies stood at a percentage of 99% for the financial year 2024. For the financial year 2024, but along with that, sir, IRDAI, that is Insurance Regulatory and Development Authority of India, has released claim settlement ratio in the latest stats, that is known as Handbook on Indian Insurance Statistics 2023-24. So what is important for you? First thing which is important for you is Handbook on Indian Insurance Statistics 2023-24 has been presented by whom? Obviously, sir, the regulator of insurance company, that is IRDAI, and
Which data is the most important data under this particular report? So the most important data is claim settlement ratio. The most important data is claim settlement ratio. India's largest life insurance company is LIC. Government's largest life insurance company is again LIC. And if I talk about in terms of LIC, so LIC is on the first rank. LIC is on the first rank in terms of number of claims settled. So if someone asks you, name the company which has settled down the highest number of claims related to the life insurance, then your answer should be LIC, which is the largest insurance company of the country. होगी भी क्यों नहीं? क्योंकि अगर इंडिया की सबसे ज़्यादा बड़ी largest insurance company है, तो most of the insurance facilities are provided to the public under this insurance company itself, and obviously it is responsible to make the claims. So related to that, I have given you the information. You can just read the name Axis Max Life Insurance. Just read the name LIC. That is important. And lastly, just read out the names of the companies which has provided 100% claim settlement ratio. But मुझे ऐसा लगता है कि इस न्यूज में से ये क्वेश्चन पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लेम सेटलमेंट रेशियो, और चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन 5 for claim settlement ratio. Then your answer should be, so claim settlement ratio, it is an important metric that shows the trustworthiness of an insurance company. It is expressed in terms of percentage of total claims settled by the company in shortest possible window of 30 days. That means the percentage of total claims settled by the company in the shortest possible window of 30 days. Whenever we talk about insurance, in case of insurance, we have three parties involved. We have three parties involved. One we call it as insured, other one we call it as insurer, and the third one we call it as insurer. Other one we call it as insured party. So the one who is doing the insurance, that is the insurance company, is known as insurer, and that is the reason this point is written again and again. Is it clear? So life insurance is the type of insurance in which insurance is done related to death. That means claim will be paid at the time of death. Beside this, all other insurances which are related to your assets like bike insurance, car insurance, house insurance, for that matter health insurance, they all are included under the category of non-life insurances. Is it clear? Okay. Now, moving on to the next and the most important news of the evening, please pay attention. So, SEBI regulatory framework for SME has come up with the new norms related to the initial public offering. I have few questions before I start the discussion of this particular news. My first question is, when we say small and medium enterprises, and if a company, a small and medium enterprises wants to issue its IPOs, do these IPOs will be issued, or the registration of these companies will be done on Bombay Stock Exchange, on National Stock Exchange, or do we have some separate stock exchanges for small and medium enterprises? Any idea, guys? Any idea? Do we have separate stock exchange for small and medium enterprises? Your answer should be yes or no. You have to find it out. You have to find it out. First question. Second question for you all is, number of stock exchanges in India. Number of stock exchanges in India. You need to share the answers with me. You need to share the answers of these two questions with me in the comment section once I'll complete the discussion, once I'll complete the session. Remember one thing, sir, SEBI has recently notified that small and medium enterprises, if they want to go public means if the company wants to issue the shares openly to the public, that will be allowed only after the approval is given by SEBI. But before you reach to SEBI to seek the approval, there are certain conditions introduced. The first condition is profitability requirement, and also there is a second condition related to the promoters shareholding, or I would say how much shares can be offloaded by the promoters before they sell, or before they issue, or before they go public.
So before I discuss this news, I believe this is one of the most important news of this particular week. It is one of the most important news of this particular week. I want you all to first check this out. Do we have separate stock exchanges for small and medium enterprises? What are the number of stock exchanges in the country? Lastly, you need to go through with one more important topic, that what are the current conditions? What are the current conditions or rules and regulations set by SEBI for small and medium enterprises so that they can go public? So don't worry, I will be discussing this news, I will be continuing this news in the next session. There's nothing to worry, but I want you to do some homework, because this is something which is going to be asked for sure in RBI examination as well as in SEBI examination in the upcoming year itself. Now, as you asked me that, sir, please include the questions based on the previous session. So I have come up with the revision part as well. So let's quickly revise the questions which we have discussed, or revise the news which we have discussed in the previous session. So I have the first question on the same. If you all are ready and you want me to start with the discussion, just give me yes, sir. If you were not present in the previous session, nothing to worry. Just try to answer the question. If you can, it's okay. Otherwise, you will be able to answer the questions from next class onwards, which is going to be on Saturday, same time, 5:15 p.m. If you want me to start with the revision part, if you want me to start discussing the questions based on the previous session, just give me yes, sir, quickly, so that we can begin the discussion without any further delay. So here we go with the first question. The first question is now on your screen. The question says, what are the dates for the Digital Payment Awareness Week 2025, which has been announced by the Governor of RBI, Sanjay Malhotra ji, recently? So what are the dates for the Digital Payment Awareness Week? Is it March 1st to 7th, 5th to 12th, 10th to 16th, 15th to 21, 20th to 27th? What will be your answer? So the answer to this particular question is, so the dates are 10th to 16th of March. I give you the overview. So this has been the 5th Digital Payment Awareness Week, which has been announced by RBI's Governor. It will be celebrated from 10th to 16th of March 2025, and the theme is India Pays Digitally. What is the theme? So the theme is India Pays Digitally. Moving on to the next question. According to the Insurance 100 2025 report, which company emerged as the world's third strongest insurance brand? So please name the world's third strongest insurance brand as per the latest ranking which has been announced by Brand Finance. So as per the latest ranking announced by Brand Finance, life insurance company is the third. Life insurance company is the third strongest insurance brand in the world as per the Brand Finance report, as we have discussed in the previous session. The most strongest brand is Poland-based company, that is PZU. And if I talk about the most valued brand, is China-based or Chinese brand, that is Ping An, is the most valued. It is most valued brand, and this is the strongest brand. I hope it's clear. Moving on to the next news. So the next news says, recently, Niva Bupa Health Insurance Company, which was earlier known as Max Bupa Health Insurance Company Limited, has introduced Dash, a health insurance plan to address the healthcare needs of India's missing middle. So I hope you remember missing middle. 40% of India's population is included. 40 crore population of India is included under the category of missing middle, and in order to address the needs of the missing middle, Niva Bupa Insurance Company has launched, or it has come up with a health insurance plan. And what is the name of this health insurance plan? So the name of this health insurance plan is RISE. Absolutely correct, Nayak Suman Parmeshwar, you have given the correct answer. Moving on to the last question, second last question, I believe. Who has been appointed as the Executive Director of Reserve Bank of India on 3rd of March 2025? Out of the following, who has been appointed as the Executive Director of Reserve Bank of India? What will be your answer? So the new appointment of the Reserve Bank of India's Executive Director
was done recently, and the answer to this particular question is Ajit Ratnagar Joshi. Nayak ji has again given the correct answer. बहुत बढ़िया. Moving on to the last question. Sir, according to the ICRA's latest projections, what is the expected GDP growth rate for India's financial year 2025-26? For 2024-25, we are expecting that Indian economy will grow at a rate of 6.3%, but for financial year 2025-26, Indian economy is going to grow at what rate? Sir, Indian economy is going to grow at a rate of what percent? Sir, it is going to grow at a rate of 6.5%. So my answer to this particular question is B option. I hope each and every point is clear. I have discussed all the questions with you, and even today we have discussed a descriptive question. Try to write a good descriptive answer on the given lines which I have shared with you in the class itself, and I will be giving you the simple answer on the same question pretty soon. Is it fine, guys? Is it fine? So do let me know in the comment section. I hope all your suggestions were implemented in this particular session. Still, if you have some more suggestions to give, if you have some more feedbacks to share, you can comment in the comment section in the video itself, and I will be going through with your comments, and I'll try my level best to include them as well in my discussion. I will try my level best to include all your suggestions in my upcoming sessions to go. Is it fine, guys? Don't forget to like the session before leaving. If you haven't hit the like button, do hit the like button, and do answer the questions, the two homeworks which I have given you. Number of stock exchanges in the country. Second is, do we have separate stock exchange for small and medium enterprises? And thirdly is your third part is your homework which you need to do. What are the conditions which a company needs to fulfill in order to issue its IPO if the company is in the category of small and medium enterprises? I hope it's fine. Okay, so that will be all from my side, guys. We'll catch you soon. Happy Holi, everyone, and I will be catching you all in the next session to go. Good luck. God bless you all.